स्वीडन वालों को मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ इंडिया आके इंडियन खाना खा के देखो। आई एम श्योर आप अपना विदेशी खाना भूल जाओगे। हेलो गाइज़, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हाउ पियो किसको। मैं हूं आपका फ्रेंड केतन और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हम आ गए हैं आइकिया आउटलेट में विच इज़ इन बैंगलोर। फर्स्ट आउटलेट है हैदराबाद में। आइकिया एक स्वीडिश फर्नीचर एंड फर्निशिंग कंपनी है जो आई थिंक बैक 1943 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड इट हैज़ मूव्ड अक्रॉस द ग्लोब एंड नाउ इट इज़ इन इंडिया। बैंगलोर में हाल ही में खुला है, जस्ट बिन लाइक 2 weeks फ्रॉम नाउ। जून एंड में खुला है। और चलिए अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने के लिए भी स्वीडिश डिशेस होते हैं, तो हम यहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स देंगे यहाँ पे आप क्या क्या खरीद सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। मेरा भी फर्स्ट टाइम है आइकिया में। मुझे जो आके यहाँ समझ में आया, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं जो आपको आँखों में बहुत ही पसंद आएंगे देखने में, और आपको अच्छा आइडिया मिलेगा अपने घर को कैसे डेकोरेट किया जा सके। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ थोड़े बहुत यहाँ पे चीज़ें जो डिस्प्ले में, हर चीज़ पे उनका प्राइस टैग लगा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस लैम्प 1090 रुपीज़, देन देयर इज दिस लैपटॉप स्टैंड विच इज़ फॉर 500 रुपीज़। ऐसे करके बहुत सारे छोटे बड़े, ये देखिए ये प्लांटर है विच इज़ फॉर 1000 रुपीज़। नाइस ना। एंड what else can I show you? So we have this shelving unit. This entire unit is for 1790 rupees, which is pretty good a deal. So basically मुझे जो समझ में आ रहा है, quality wise it is not like super strong, but look wise it is definitely good enough. And ये देखिए additional storage areas बने हुए हैं, shelves बने हुए हैं। There's another concept over here, if you can see. Look at these paintings. तो ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। यू कैन चूज़ एंड बाय थिंग्स एज पर योर टेस्ट। चलिए आगे चल के और देखते हैं क्या है यहाँ। सो गाइज, दो इट्स अ मंडे इवनिंग बट भीड़ काफ़ी है, गिवन कि मंडे इवनिंग्स को यू माइट नॉट एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ रश। और वन गुड थिंग अबाउट IKEA इज़ द एंटायर स्टोर इज़ डिज़ाइंड इन अ वे दैट यू वुड कवर एवरीथिंग। once you start walking, the store is so well designed that you will not exit until and unless you cover the entire store. Of course, there are points in between जहाँ से you can exit if you really want to. Otherwise, they'll make sure, and there are sections. There's a floor for furniture. There's a floor for furnishings. सब कुछ बहुत अच्छे वे में classified है. You can see things on display on the models
और द कॉन्सेप्ट्स ऑन द टॉप फ्लोर एंड लोअर फ्लोर्स पे आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आइए मेरे साथ और एक्सप्लोर करते हैं। Guys, if you get confused anywhere in between, you can see and the maps over here, और accordingly आप आगे पीछे जा सकते हैं whichever way you wish to go to. So we plan to head to the restaurant next. So ये है रेस्टोरेंट, देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। सब कुछ सेल्फ सर्विस पे है इधर। So you pay here for the things you wanna buy and then go to the respective counter and collect your belongings. So basically आप यहाँ से अपना एक ट्रॉली लेते हैं और उसके ऊपर अपना ट्रे रखते हैं। आगे यहाँ से आप अपने कप्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। And here it starts. You've got mango cake for 140, chicken meatballs for 250, paneer butter masala for 250, salmon fillet for 590. You've got assorted cookies, soup of the day, bread with butter. And this side we've got salad. Let me give you a closer look. Curd, sugarcane juice, Balenciaga orange, chicken nuggets, paneer butter masala, rice. And here we have chicken meatball platter. ये क्या है? Chicken meatball. And ये Mashed potato, steamed veggies. mashed potatoes and steamed veggies. आ गया है मेरा स्वीडिश मील। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ वेजी बॉल प्लाटर जिसको सर्व किया गया है क्रीम सॉस, मैश्ड पोटैटोज एंड सॉटेड वेजीज। साथ में मैंने एक ऑर्डर किया है मैंगो चॉकलेट पेस्ट्री। तो चलिए सब कुछ टेस्ट करता हूँ और अब तक इसका जायका पहुँचाता हूँ। पहले मैं ये वेजी बॉल अलग से ट्राई करने जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा ड्राई लगा मुझे। दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव सर्व्ड दिस विद दिस क्रीम सॉस। अदरवाइज बहुत बेसिक टेस्ट है, नॉट टू मसालेदार, नॉट टू स्पाइसी। क्रीम सॉस काफ़ी बटरी है। आई एम श्योर ये बटर से बनाया गया है एंड आई एम नॉट रियली श्योर उसके अलावा क्या इसमें इंग्रेडिएंट है। मैश्ड पोटैटोज स्मूथ, बिल्कुल ही स्मूथ है मैश्ड पोटैटोज एंड द सॉटेड वेजीज। ओके, दिस डजंट सीम टू बी सॉटेड, ये सिर्फ स्टीम्ड लग रहा है। और ये है स्वीडन का फ्लैग। साथ ही साथ पेस्ट्री भी ट्राई कर लेता हूँ। दिस इज़ रियली नाइस। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द आइटम्स आई टेस्टेड सो फार, दिस इज़ द बेस्ट। इस वेज प्लाटर का प्राइस है 200 रुपीज़। नॉन वेज वाला, चिकन वाला, इट कॉस्ट 250 bucks एंड दिस केक इज़ फॉर 140 रुपीज़। सो गाइस, जैसे जैसे मैंने और आगे टेस्ट किया, ऑनेस्टली मुझसे तो नहीं चल रहा है। आई हैव लेफ्ट इट। बहुत ब्लैंड लग रहा है एज वेल एज बहुत ड्राई लग रहा है। स्वीडन वालों को मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ इंडिया आके इंडियन खाना खा के देखो। आई एम श्योर आप अपना विदेशी खाना भूल जाओगे। तो बट या पेस्ट्री इज़ ऑसम, काफ़ी सही है। तो यूनिक एक्सपीरियंस लेना हो, वेज वाला तो बिल्कुल ना ऑर्डर करें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, यू कैन स्टिल गो फॉर मीट बॉल्स, वेज बॉल, बिग डिससैटिस्फैक्शन। आप देख सकते हैं, these are for I guess 99 bucks। प्लांट का बेस है एंड दिस इज़ फॉर
Let's see how much. MRP is 279, but not all products are on MRP. How much for these? 200 का है आइसक्रीम स्कूप. तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं. These are for 99 bucks. Okay, सिलिकॉन के ये 600, 209. $450 का सेट, 999. These cushion covers are for 99 bucks. Gonna take you to the paradise of candles. So आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं. There's a whole world of candles. Just look at these. Look at this beauty. So I wouldn't say कि बहुत cheap है price wise. If you see, these are for $9.99. These are for $8.24. What else? I've already shown you these tea light candles. This one's for 100 rupees. Next we are in the section for plants and planters. Just look at these. There's a whole world of plants out here. Wide range to choose from. Not really sure if my camera is doing justice, but huge variety of plants, artificial plants to choose from. So guys, मेरी हो गई आज की शॉपिंग पूरी. थोड़ा सा लगना पड़ा था हमारे को लाइन में, हालांकि बहुत सारे काउंटर्स हैं, स्टिल थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ा था. और एक चीज़ बहुत अच्छी है आइकिया के स्टोर के बारे में कि मेट्रो से उतरते ही यहाँ पे आप आइकिया के स्टोर के अंदर आ सकते हैं. तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड, दो इट इज़ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी, बट दैट इज़ अ गुड पार्ट. रिगार्डिंग दी स्टोर, चीज़ें यूल फाइंड इन ऑल रेंज. एक्सपेंसिव है, मीडियोकर रेंज है, लोअर रेंज में है, बट मुझे बहुत ही ग्रेट ऐसा स्टील डिगिल बहुत सारी चीज़ों में लगा नहीं. हाँ, एक दो चीज़ें थी कि प्लेट्स, ग्लास प्लेट्स यू वर गेटिंग फॉर 59 bucks, विच आई काइंड ऑफ थॉट वाज अ स्टील डील, बट अदरवाइज द प्रोडक्ट्स वर लाइक either worth the cost or expensive for the cost. So I don't know why the hype about the IKEA store, but also about the food, few items were good, few were like very mediocre or bland for the Indian taste, Indian palate. So you can come here to experience the grandness, to see the grandeur, but even if you do not come to an IKEA store, you may not miss much in life.
सो ऑन दिस नोट आई वुड एंड दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें और इस एपिसोड को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन येट अनदर एपिसोड। टिल देन, eat tasty and stay happy. Know that we fly, know that they ride or die.